Hello everyone. Good morning to all of you. I hope all of you are fine and doing well. We are meeting again with a new session, that is Elite's Master Plan 0 #05. I hope all of you have gone through our earlier videos of Elite's Master Plan. If not, then go to YouTube and type Dharmesh Mehta GPAT channel, where you can go through all the earlier videos of Elite's Master Plan. Okay, so today's session we will solving MCQs on anti-anginal drugs. Okay, so क्वेश्चन ये है कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स होता क्या है. एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होता एंटी एंजाइनल ड्रग्स में क्या होता है. एंटी एंजाइनल ड्रग्स are the drugs that prevent the attacks that are occurred due to angina pectoris. Okay, so what the question is, what is angina pectoris? Angina pectoris is the disorder that occurred due to insufficient oxygen supply to the heart or the myocardium muscles of the heart. Okay, we have got an overview of what is an angina pectoris. Angina pectoris क्या है? जो चेस्ट पेन है, जो चेस्ट पेन क्यों होता है, इन हार्ट को अपने ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंटली नहीं होता है, इसके वजह से चेस्ट में पेन होता है, उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं. सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना? दैट इज वी फील स्क्वीजिंग or pressure, heaviness or tightness or pain in the chest. Okay, so we got a brief overview about what is angina, what anginal anti-anginal drugs do. So let's start with our anti-anginal MCQs. So let's see what are first MCQ. Here first question is, which of the following drugs causes Monday morning sickness? Okay, question पूछ रहा है कि कौन सा ड्रग मंडे मॉर्निंग सिकनेस कॉज करता है. तो पहला क्वेश्चन तो ये है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, राइट? We should know, right, what is morning sickness to answer this question. But first let's see the what are the options. First is isosorbate dinitrate, second is glyceryl trinitrate, third is verapamil, and D is none of the above. These are all our 4 options. But ये options के आंसर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए पहले कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है. So let's see. Morning sickness means feeling tired, nauseous and vomiting. मॉर्निंग सिकनेस में होता क्या है कि सुबह रात को सोने के बाद उठते जब है हम, उसके बाद हमें टायर्डनेस, नॉशियस या वोमिटिंग जैसा फील होता है, उसे हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं. ओके, सो ये फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, नॉशियस एंड वोमिटिंग आर मॉर्निंग सिकनेस. अभी ये तो पता चल गया कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है, बट अब ये इसमें से कौन सा ड्रग्स मॉर्निंग सिकनेस कॉज करता है. सो let's start with the first option, isosorbate dinitrate. Okay, isosorbate dinitrate कौन से क्लास का ड्रग है? It is a nitrate class of drug, right? We know, right, it is a nitrate class of drug. In the name only it is said nitrate. Okay, so it is a isosorbate dinitrate is a nitrate class of drug. And but what it does, it causes tachycardia at regular doses. Okay, तो isosorbate dinitrate क्या करता है? टैकीकार्डिया कॉज करता है. रेगुलर डोसेस में, अगर रेगुलर डोसेस के आइसोसॉर्बेट के रेगुलर डोसेस पे वो टैकीकार्डिया कॉज करता है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं. सो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं. बट व्हाट इज टैकीकार्डिया? तो टैकीकार्डिया इज एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट. टैकीकार्डिया जो है वो हार्ट रेट एबनॉर्मली बढ़ जाता है, रैपिडली हार्ट रेट होता है, रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाता है abnormally, like there is no pattern in increase in heart rate, so we call that as tachycardia. That is the tachycardia. So tachycardia is caused by isosorbate dinitrate. Let's see the third option. What is that? Is verapamil. We all know, right, कि verapamil एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बट इसका फिर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मॉर्निंग सिकनेस करता है या कुछ और करता है? लेट्स सी. verapamil causes constipation. Okay, verapamil क्या करता है? Constipation कॉज करता है. We all know, right, what is constipation. Okay, so
तो वेरापामिल भी मॉर्निंग सिकनेस कॉज नहीं करता है. तो हम वी एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड. अब so the option, so our answer can be B or D. Let's see what is the answer. Okay, so our answer is B, that is glyceryl trinitrate. Glyceryl trinitrate causes morning sickness. What? Glyceryl trinitrate is also a class of nitrates, right? Isosorbate dinitrate and glyceryl trinitrate both are the class of nitrates, but glyceryl trinitrate causes Monday morning sickness, that is morning sickness, and isosorbate dinitrate causes tachycardia. Okay, so glyceryl trinitrate is our answer, but glyceryl trinitrate is used in anti-anginal. It is used as anti-anginal drug. It can be used as transdermal patch that is applied to the skin for absorption in the treatment of angina. So it can be given as transdermal patch. Okay, so let's move to our next question. Okay, what is our next question? For anti-anginal activity, what is the mechanism of nitrates? Okay, पहले ही प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है नाइट्रेट्स के कौन से ड्रग्स थे, आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट और ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, राइट. बट अब इस क्वेश्चन में क्या पूछे, तो उसका मैकेनिज्म पूछा है उन ड्रग्स के. ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइस्टरेज, सेकंड इज स्टिमुलेटिंग guanylate cyclase, third is beta blockers, and the fourth is calcium channel blocker. Okay, these are the 4 options that are given. Okay, let's start with the beta blockers. Beta blockers से start करते हैं. Beta blockers कौन से drugs होते हैं, कुछ याद आ रहा है क्या? Beta blockers are those, right? Propranolol, metoprolol, atenolol. At the end of these drugs, what comes as lol? Okay, OL all comes, right? Okay, so those are the beta blockers. But beta blockers का mechanism, but beta blockers for anti-angina drug, what is the mechanism? Nitrates का पूछा है मैं, right? Nitrate तो beta blockers नहीं है. Okay, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसमें स्लाइड में देखा कि नाइट्रेट्स कौन है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, उनके एंडिंग में तो ऑल आ नहीं रहा है, और बीटा ब्लॉकर्स के जो ड्रग्स है उनके एंडिंग में ऑल आता है, तो ये तो गया, राइट. सो वी विल सी नेक्स्ट calcium channel blocker. Okay, what are the called calcium channel blockers? Calcium channel blockers drugs कौन से हैं? Verapamil, diltiazem, nifedipine, right? Okay, but this is also not the mechanism of nitrates क्योंकि इसके drugs तो अलग है, Verapamil, diltiazem, right? Okay, so we can eliminate these options also. Okay, these 2 options are remaining now. Let's see the first option, inhibiting phosphodiesterase. Okay, what does phosphodiesterase do, and what are the drugs used that inhibits phosphodiesterase? Okay, the drugs that inhibit phosphodiesterase are ambrinolol, tadalafil, sildenafil. Okay, and that are used in chronic obstructive pulmonary disease or erectile dysfunction and all other diseases. So okay, so this is not also the mechanism of nitrates. So what is left is this B, stimulating guanylyl cyclase. So we have eliminated A, we have eliminated C, and we have eliminated D. So what is left is D. So this might be the answer, right? Stimulating guanylate cyclase. So let's see what is the mechanism of nitrates and how it stimulates guanylate cyclase. Okay, so let's see here. This is the nitrates, our drug. Okay, which after entering into the body degrades into NO. NO क्या है? NO is nitric oxide. Okay, ये NO nitric oxide हमारे body के endothelial cells भी secrete करते हैं. Okay, so फिर NO जो nitric oxide produce हुआ है वो क्या करेगा, guanylyl cyclase जो है वो inactive state में उसको active करेगा. guanylyl cyclase को कौन? nitric oxide जो release हुआ है नाइट्रेट से. फिर ये guanylyl cyclase क्या करेगा, what it will do, it will convert GTP, that is guanosine triphosphate, to CGMP, that is cyclic guanosine monophosphate, right? So it will convert GTP to CGMP, who guanyl, that is activated guanyl cyclase, which is activated by nitric oxide. So this here we can see that nitrates activate guanyl cyclase, that is stimulate guanylate cyclase. Okay, so let's see.
cyclic guanosine monophosphate. Then what it does, it converts myosin light chain, LCS light chain, which is in phosphorylated state. It converts this phosphorylated state into dephosphorylated state. Okay, what that does, cGMP converts myosin light chain, which is phosphorylated state, convert into myosin light chain, that is dephosphorylated state. Okay, but from where myosin light chain phosphorylated come? This here. See, myosin light chain is present here. Okay, so it is converted into phosphated form by using kinase enzyme. Okay, myosin light chain kinase enzyme. Okay, so what does myosin light chain phosphorylated form does? It binds with the actin and does contraction. Okay, it does contraction. But when cGMP converts this phosphated form to dephosphated form, what occurs? It's relaxation occurs. Okay, so we get relaxation from the pain, and again contraction doesn't occur. So what it does, nitrates activate or stimulate guanyl cyclase, which ultimately cause relaxation. Okay, so this is the mechanism of nitrates. So what will be our answer? This is B, stimulating guanylate cyclase. Okay, but what the long term use of administration of nitrates can cause tolerance. अगर बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग नाइट्रेट्स लेंगे तो वो टॉलरेंस डेवलप करता है. टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत टाइम तक वो डोज ले रहे, वो ड्रग ले रहे एक डोज पे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो डोज पे हमारा वो पेन कम नहीं होगा, वो ड्रग उतने पेन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, हमें उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा इफेक्ट लाने के लिए. ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस. ओके, सो हम लोग लॉन्ग टर्म पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो वो टॉलरेंस कॉज करेगा कौन, नाइट्रेट्स का. ओके, सो देयर दिस वे आवर 2 क्वेश्चंस, 3 more questions to go. Okay, before moving to the next question, if you are enjoying this session and if you want to watch more videos, so please subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such new exciting videos. And if you want to join our WhatsApp group, then please contact on this number. You will be added to our WhatsApp group also. So let's move to our next question. Third one. Question is, anti-anginal drug useful for the emergency treatment of cyanide poisoning is. Okay, anti-anginal drugs तो बहुत सारे, right? उसमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होता है, साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज एस्पिरिन, सेकंड इज नाइफेडिपिन, थर्ड इज अमाइल नाइट्रेट एंड द फोर्थ वन इज डाइपाइरिडामोल. ओके, सो हम लोग को कौन इनमें से वो ड्रग ढूंढना है जो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज होता है. ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एस्पिरिन. एस्पिरिन वी ऑल नो, राइट? इट इज वी ऑल आर फैमिलियर विद द ड्रग एस्पिरिन. उसका मैकेनिज्म क्या है और वो काम क्या करता है, मतलब किसमें यूज होता है एस्पिरिन? उसके कुछ 3 यूजेस है, राइट? एस्पिरिन इज यूज्ड फॉर एंटीपायरेटिक, एंटीकोगुलेंट and anti-inflammatory, right? And aspirin is NSAIDs, so it is used as antipyretic, anti-inflammatory and anticoagulant, right? Okay, so aspirin का cyanide poisoning का कोई relation नहीं है फिर. Okay, it can't be used in treatment of cyanide poisoning, तो हम उसको eliminate करते हैं. फिर नाइफेडिपिन लेते हैं. Okay, so what does नाइफेडिपिन drug does? Okay, नाइफेडिपिन we all know, right? नाइफेडिपिन is a calcium channel blocker. So calcium channel blocker nifedipine, but we never heard about that nifedipine is used in cyanide poisoning, right? It does only calcium, it does only blockage of calcium channel. Okay, so it can't, so this can't be also option. Let's see the fourth option, dipyridamole. Okay, what is dipyridamole drug? It is used for platelet inhibitor. Okay, it is used as platelet inhibitor and it inhibits the clumping of platelets and allow the blood to flow easily. Okay, so इसका cyanide poisoning का तो कोई relation ही नहीं है. It works with the platelet, right? So it also can't be used. So what is left is amyl nitrate. Again, the drug of nitrate class, that is amyl nitrate. Okay,
तो अमाइल नाइट्रेट यूज हो सकता है, बट वो कैसे यूज होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है लोग देखेंगे. ओके, सी nitrates generate methemoglobin, which is high affinity for cyanide radical, which forms cyanomethemoglobin. Okay, let's see, we will see the mechanism in the next slide. Till then, see angine aspirin, which improves angina symptoms and reduce ability of blood to clot. Okay, which act as anti-clotting. Okay, nifedipine, we all know that is calcium channel blocker, which predominantly shows peripheral action. And dipyridamole is also used as in the treatment of angina, and which is a long acting drug, so it is used, it shows longer duration of treatment. Okay, so amyl nitrate is used for treatment of cyanide poisoning, and we have seen this. We will see the mechanism in the next slide. This is our answer, that is amyl nitrate is used in the treatment of cyanide poisoning. Okay, let's see the mechanism. Okay, first we'll see this, that amyl nitrate is given by inhalation. There is amyl nitrate can be given by inhalation for treating angina, and it is a drug of choice for long acting organonitrate. Okay, it is also amyl nitrate inhalation से देते हैं angina के treatment में, और ये एक long drug of choice भी है for long acting organonitrate. Okay, amyl nitrate एक long acting nitrate है. Okay, so let's see the mechanism. Okay, see, this is Hb is our hemoglobin. It will react with this nitrate drug, that is amyl nitrate or sodium nitrite, and then it will form methemoglobin. Okay, methemoglobin. Okay, so when cyanide poisoning occurs, this cyanide form complex with the cytochrome oxidase. Okay, so here the methemoglobin, which is formed by the reaction of hemoglobin and amyl nitrite. So this methemoglobin will react with this complex that is formed by the cyanide and cytochrome oxidase, and we get cyanomethemoglobin plus cytochrome oxidase. Okay, so ये जो methemoglobin बना था, वो cyanide cytochrome oxidase का जो complex है उसके साथ react करके cyanomethemoglobin देता है, मतलब cyanide को इधर से निकालता है. ओके, तो फिर cyanomethemoglobin मिलेगा और cytochrome oxidase रिलीज होगा. ओके, सो क्या फिर, बट साइनोमिथेमोग्लोबिन को अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे थायोसल्फेट से, तो हमें थायोसाइनेट मिलेगा, सल्फाइड, और मिथेमोग्लोबिन फिर से रिलीज होगा, एंड थायोसाइनेट इज नॉट टॉक्सिक. ओके, सो इन दिस वे वी कैन use amyl nitrite as a treatment in cyanide poisoning. Okay, hope you all understood this. Let's move to the next question. So our next question is propranolol. Okay, see this LOL. This is a beta blocker. Okay, this is a beta blocker drug. This LOL. It has come in this name. Okay, propranolol is given with nifedipine in the treatment of exertion angina, because question पूछ रहा है कि propranolol को nifedipine के साथ exertion angina के treatment में क्यों दिया जाता है. पहले तो question ये है, what is exertion angina? Okay, so exertion angina is a Prinzmetal angina, that is variant angina, right? We all know that angina has classified, right? There is types. So one of the type is Prinzmetal angina, that is variant angina. वो Prinzmetal angina, variant angina क्यों होता है, कब होता है? At the rest, when we are taking rest, at that time when we feel pain, then that this angina, at that time we suffer from exertion angina. Okay, तो exertion angina में propranolol को nifedipine के साथ क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है. So let's see the options. Okay, first option is propranolol prevents reflex tachycardia caused by nifedipine. क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रोप्रानोल प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो नाइफेडिपिन, मतलब नाइफेडिपिन जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है उसको प्रोप्रानोल प्रिवेंट करता है, इसलिए देते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहे हैं फर्स्ट. सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोप्रानोल प्रिवेंट्स मायोकार्डियल इस्चेमिया caused by nifedipine. Okay, second option is saying that propranolol prevents myocardial oxygen which is caused by the nifedipine. Then let's see the
Third option is both A and B. And the last option is none of the above. Okay. So what do you think? Why propranolol is given with nifedipine and what nifedipine cause? Okay, let's see. Here. Say, we all know, right? Nifedipine is a calcium channel blocker, right? Calcium channel, nifedipine calcium channel blocker है. तो nifedipine क्या करता है? Tachycardia करता है. Nifedipine produces tachycardia and increases contractility. Okay, so which is blocked by, then nifedipine produces tachycardia. That which is blocked by beta blocker, that is propranolol. Propranolol is a beta blocker, right ना? पर nifedipine tachycardia करेगा. Tachycardia मतलब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बट बीटा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट पे, राइट? बीटा 1 बीटा 2. तो बीटा 1 हार्ट पे होता है रिसेप्टर. अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा ना, तो इसलिए जो टैकीकार्डिया होगा वो प्रोड्यूस होने से प्रिवेंट करेगा. कौन? प्रोप्रानोलॉल, दैट इज बीटा ब्लॉकर. इसलिए दैट इज व्हाई प्रोप्रानोलॉल इज गिवन विद द नाइफेडिपिन. दैट व्हाई propranolol prevents reflex tachycardia caused by the nifedipine. Okay, so what is myocardial ischemia? Myocardial ischemia का मीनिंग क्या है? आइस्चेमिया कब होता है? जब हार्ट को ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिलता है, तब मायोकार्डियल आइस्चेमिया होता है. ओके, एंड दैट इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डैमेज टू कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट. ओके, so see, nifedipine but doesn't cause only tachycardia. It also causes hyperglycemia by decreasing insulin release. Okay, nifedipine सिर्फ टैकीकार्डिया नहीं प्रोड्यूस करता है, वो हाइपरग्लाइसीमिया भी प्रोड्यूस करता है. इंसुलिन का रिलीज को डिक्रीज करता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाता है. दैट इज कॉज हाइपरग्लाइसीमिया. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस व्हाई प्रोप्रानोलॉल इज गिवन विद नाइफेडिपिन. So let's move to the next question. So this is our last question, which is which of the following enantiomers of verapamil is calcium channel blocker? Okay, question पूछ रहा है कि verapamil का कौन सा enantiomer calcium channel blocker करके use होता है. Let's see the options. First is levo, second is dextro, third is racemic, and the fourth is none. Okay, so we all know, right? He has only given that verapamil is a calcium channel blocker. तो उसका कौन सा enantiomer यूज होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करके? लीवो, डेक्स्ट्रो, रेसमिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं. See the structure. This is the structure of verapamil. This is diphenyl and here is the cyanide group. Okay, and these are the ether groups, right? You can see this ether groups, and this is the nitrogen that is with the alkyl, that is methyl group. This is the structure of verapamil. So which form of verapamil is given? That is the racemic form. Racemic mixture of verapamil is used as calcium channel blocker. So racemic mixture होता क्या है? Racemic mixture means 50% of R and 50% of S form होता है. हम उसे racemic mixture होता है. Equal mixture of S and R form is called as racemic mixture. Okay, but इसमें verapamil का जो S form है वो 20-fold had greater potency than compared to R form. The S enantiomer of verapamil had 20-fold greater potency compared to R form, but the S form that is enantiomer of verapamil S get metabolized easily compared to R enantiomer. Okay, so they are given in a racemic mixture because of that. And this along with verapamil we can also give propranolol. Propranolol, that is beta blocker. Why? Because they show synergistic or additive effect for anti-angiogenic activity. What is synergistic or additive? Means अगर propranolol alone देंगे या फिर verapamil alone देंगे तो उनका इफेक्ट ठीक है रहेगा, बट अगर हम दोनों को साथ में देंगे तो इनफेक्ट इनका दोनों का इफेक्ट एंटी एंजियोनल एक्टिविटी का और बढ़ेगा. ओके, तो हम लोग इनको साथ में देंगे तो इनका इफेक्ट बढ़ेगा. दैट इज इट विल शो synergistic or additive effect. Okay, okay, and verapamil drug is also synthesized by Hans Pyridine
synthesis. Okay, this is the synthesis of verapamil. There is Hans pyridine synthesis where we use formaldehyde and beta ketoesters. Okay, for the synthesis of verapamil. So we have seen that racemic mixture of enantiomer racemic mixture of verapamil is used as calcium channel blocker, and this is the structure of verapamil. We have seen that propanol plus verapamil shows synergistic or additive effect. Okay, so this was the last question of today's session. I hope all of you enjoyed this session. Thank you so much for joining with us. Be safe, be stay home, and be happy. And we will see you with our next video. So till then, bye. Thank you so much.